मदनी चैनल और बिलखुसूस साउथ अफ्रीका के नाजरीन को खुशी की खबर देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर खलीफा अमीर अहल सुन्नत अलहाज मौलाना उबैद रजा अत्तारी मदनी मुद्दा जिल्लुहुल आली 2 अगस्त को साउथ अफ्रीका तशरीफ ला रहे हैं, जहां जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन और केप टाउन समेत दीगर मकामात पर सुन्नत भरे इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें खलीफा अमीर अहल सुन्नत सुन्नत भरे बयानात फरमाएंगे और सफर साउथ अफ्रीका के दौरान खलीफा अमीर अहल सुन्नत मकामी जिम्मेदारान और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल से मुलाकात भी फरमाएंगे। इस हवाले से निगरान साउथ अफ्रीका मुशावरत ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया। ग्रेट न्यूज़ माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, शहजादे हुजूर हाजी उबैद रजा अत्तारी अल मदनी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल will be touching down in the soils of South Africa on the 2nd of August. Many programs and ijtima'at has been set up throughout the country. On the 3rd of August, inshallah Azza wa Jalla, on Thursday, in Faizane Medina, Cape Town, inshallah Azza wa Jalla, will be a public ijtima, sunnah inspiring ijtima. Thereafter, inshallah Azza wa Jalla, on the weekend, Saturday and Sunday, Shahzadi Huzur will be in KZN, Sufi Nagar, inshallah Azza wa Jalla. For Limpopo province, on Monday, the 7th of August, inshallah Azza wa Jalla, will be coming to your province, inshallah Azza wa Jalla. Wednesday and Thursday, inshallah Azza wa Jalla, Lesotho country will be blessed with the presence of Shehzade Huzur, inshallah Azza wa Jal. Do not miss the Sunnah inspiring Ijtima, especially on the 10th of August in Maseru, Lesotho. Inshallah Azza wa Jal, we will keep you updated in social media, and we hope inshallah Azza wa Jal that you, the viewers of Madani Channel that are living around these surrounding areas, will be attending these beautiful ijtima'at. May Allah Azza wa Jal shower His special mercy upon him, and may Allah Tabarak grant him a long life and good health, and may our Dawateislami become glorious in every corner of the world.